Diamonds on fleek, bitch ain't talking about heat. Put it on, screw, straight up, screw, straight up, screws. हेलो गाइस, सो ये मेरी फर्स्ट पीसी गेम है फाइनली एंड इसका नाम है गेटिंग ओवर इट विद बेनेट 4D। सो मैंने ये गेम कल खेली थी, बस कल नहीं परसों खेली थी, तो मैं आपको बताऊंगा वो पॉइंट जहाँ तक मैं पहुँचा था। ज़्यादा ऊपर नहीं है, थोड़ा सा ही है। बाकी ऐसा लगता है इस गेम के लिए ना माउस पैड छोटा है, मतलब ऐसी बात नहीं है, मेरा माउस पैड बड़ा ही है देखो, बट समझ रहे तुम, मतलब इसके लिए माउस को इतना घुमाना पड़ता है और माउस पैड इतना सा होता है। घूम तो छोटे फ्लिक्स से भी जाता है, बट आना चाहिए घुमाना। हैमर बस इसकी बकचोदियाँ शुरू हो जाएंगी। सो ये चैनल जो है, ये जो अभी बनाया हमने, ये पुराने चैनल को रीनेम किया है हमने। पुराने चैनल में हम करते थे, मतलब उसको पुराने चैनल बोलेंगे, ठीक है। नए चैनल ये है। Ready for that? Like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. You're welcome. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazor, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. ये नहीं होने लगी भाई हफ्ते के अंदर। ओ भाई, एक तो ये पीछे पियानो बज रहा है, ऊपर से फिर इसकी बकवास आवाज। और तुमको पता है इसमें इस गेम की एक जो बैकग्राउंड वॉइस है, मेरे को लग रहा था वो मेरे माइक से आ रही है। इसकी एक अपनी वो बैकग्राउंड सी नॉइज है जिसमें वो सिटी का शोर जैसा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा पंखा घूम रहा है इसकी गेम में। मुझे इसलिए पता लगा क्योंकि माइक में ना मेरी आवाज़ आ रही थी, मेरे को लगा मेरे आ रही है। Very nice, very nice, very nice, very nice. देखो ऐसा है, मैं कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, ये बहुत वैसी गेम। Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. Hiking कैसे sexy हो सकती है? It might take you an hour to get over that tree. A lot of people never got past it. You prod and poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. शाबाश, शाबाश मेरा बच्चा। Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. हाँ, अंदर एक वाह भाई, ऐसी चीज़ जब मार लेता है। शाबाश। मम्मी चलो बोलना बंद हो गया फाइनली ये लड़का। स्पीड देख रहे तुम भाई की? The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating.
But I'm not sure Jazzuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. जो तुम्हें कानों में वो अजीब सी आवाज नहीं जैसे बारिश हो रही है वो इसकी आवाज है इस गेम की ऐसी आवाज Get nasty over there, boy. कॉपीराइट ना पड़ेगा Going down the road feeling bad. I'm going down the road feeling bad. Going down the road feeling bad, and I ain't going to be treated this way. Oh, turn down, boy, turn down. Hey! Let's go. Nah. नहीं ब्रो फिसलना बंद कर चल भोसड़ी के चल भोसड़ी के माँ चौथ की ले तेरी नाना वो इस पत्थर में टिक जाता है इसकी आँख टिक नहीं इस तरफ को भी नहीं बैंड के घोड़े मेरा मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है हार्ट अटैक आ जाता अगर गिर जाता अरे थोड़ा आगे लेना लोड़े For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium.
the lingua franca of the digital age. You could build culture out of trash, but only trash culture. Be games, be movies, be music, be philosophy. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. पहले दिन नहीं तोड़ना Bro, what the hell, man? Slowly, बच्चा वहाँ है, बच्चे पे fragile. नहीं टच प्यार से एकदम पहुंच जाएगा जंप भी लगानी पड़ेगी पर लगाऊं कैसे The soul would have no rainbow, had the eyes no tears. John Vance Cheney. Fuck it. Fuck it. Fuck it. यार भाई इतना मेहनत किया था मैं यार स्पीड रन देखा था मैंने उफ क्या जानवर है साला उसको देख के ऐसा लगता है कितनी आसान गेम है Grief is an interval between two moments of joy. बहुत है और कौन सी जैसे ये गेम है पता नहीं मेरे को लगता है तुम्हें सबको पसंद नहीं आएगी बहन के लौड़े अगर तू उए वापस कैसे जाऊं Stable, bro, stable.
गलती का स्कोप नहीं है। तुक्के से पकड़ा मैंने कि बस गिरियो मत। संतरे तक तो पहुंचा जाए आज। संतरा then I know I wouldn't worry anymore. No, wouldn't worry anymore. No. No, please सच्ची में no। तो ये करना कैसे है? क्या करूँ उसका? टिक जाएगा। टिक गया। यार भाई क्या दिमाग खराब है इसका। बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है बच्चों गेम से। When games were new, they wanted a lot from you. Yeah. Daunting you, taunting you, resetting and delaying you. Players played stoically. Now everyone's turned off by that. They want to burn through it quickly. A quick fix for the fickle. Some tricks for the clicks of the feckless. But that's not you. You're an acrobat. You could swallow a baseball bat. Huh? I could swallow a baseball bat? और मुझे पता ही नहीं है। Of all sad words, tongue or pen, the saddest No of reactions. these. Fuck you. It might have been John Greenleaf चल Whittier. ना भाई। फिर से If you try to please audience, uncritically accepting their tastes, it can only mean that you have Thank you no guys respect for watching. them. Andre. बाय बाय। कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ज़रूरी नहीं है, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। शेयर भी कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, एंड अगर बुरी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा। बाकी इस भोसड़ी वाले का तो कार्यक्रम हफ्ता भर चलता ही रहेगा।